हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो ऑफ रोहित शर्मा विद चैंपियंस ट्रॉफी। 7 मई को रोहित शर्मा सर ने एक अनाउंसमेंट किया है उनका टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का। तो ये स्केच एक ट्रिब्यूट भी होने वाला है उनके लिए। चारकोल का यूज करूंगा मैं ये आर्ट वर्क बनाने के लिए एंड आपके साथ स्केचिंग प्रोसेस शेयर भी करूंगा। एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट नॉक ऑफ रोहित शर्मा इन द कमेंट्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। यू कैन सी माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन। You can follow me there for more information and ideas. तो without wasting any time, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी का बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चारकोल यूज करने से पहले आप अपने हाथों के नीचे एक पेपर जरूर रखना, नहीं तो चारकोल स्मज बहुत होता है तो वो आपके स्केच को खराब कर देगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर को फ्लैट ब्रश के टिप पे लगा के हल्का सा एक बेस लेयर अप्लाई करूंगा। एज यू कैन सी, आफ्टर द बेस लेयर हम फेस पे भी हाईलाइट्स एंड शैडोज ऐड करेंगे ताकि डेप्थ क्रिएट हो सके एंड एक 3D लुक आए। और जब हमारा शैडोज एंड हाईलाइट्स बनाना हो जाए उसके बाद आखिर में हम डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि छोटे छोटे हाइलाइट्स, स्किन टेक्सचर्स, आईब्रोज, ये सब। बियर्ड पे भी डिटेल्स है एंड बियर्ड सब जगह से सेम वैल्यू का नहीं है। सो हम बियर्ड जहाँ पे ज्यादा डार्क है वहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा चारकोल पाउडर यूज करेंगे एंड जहाँ पे बियर्ड थोड़ा कम डार्क है वहाँ पे हल्का सा चारकोल पाउडर यूज करके बेस लेयर देंगे। बेस लेयर देने के बाद मैं बियर्ड पे हाईलाइट सेट करूंगा यूजिंग मोनो जीरो इरेजर। सो गाइज आप देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ट्रॉफी पे भी जहाँ पे हमें हाईलाइट्स देना है वो सब जगह हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें हाईलाइट सेट करना है और चारकोल इजीली इरेज नहीं होता है, तो हाईलाइट्स एरिया पे हम चारकोल पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। वीडियो यहीं तक था गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आएगा गाइस। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। भारत माता की जय।